Hello guys, welcome. Am I online? Sorry for a bit delay in this session. There had been some connection problems from this end. Hi guys, am I audible? Am I visible to you guys? Are we good to start the session? Please let me know if there's still a problem that's coming. So yes, welcome to Unacademy channel. Welcome to this amazing thing of Let's Crack Foundation in NTSE where you and I are together, you know, being a part of discussing chemistry, है ना? तो ये केमिस्ट्री हम साथ में बैठ के डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि हम करते आए हैं अभी तक एंड ऑल्सो यू गाइज आर वेरी यस हाय आदिल fine I get it now. I'm live, so glad to be live. First of all, I'm really sorry for a bit delay over here because there was some connection problem. Hi Vansh, what's up? So yes, welcome to Let's Crack Foundation in NTSE. I am here, Devyani Gautam, with you guys, and we are gonna you know we are gonna get it in chemistry and we'll crack every exam, everything that we want to. This is my introduction. I am an MSc in applied chemistry. I'm an ardent reader, a writer, a music lover. I'm a true blue Delhiite, a science enthusiast, a food scientist, and a teacher. Right? I'm glad to be here. Hello, Kalai Arasan. Hi, Agamya. What's up, you guys? Hanji. So yes, in Foundation and NTSE, what are we doing is we are actually, picking up the chapters, interesting chemistry chapters, जो भी आपके NTSE या Foundation के point of view से they are very, crucial. हम उन चीजों को pick कर रहे हैं and we are thoroughly going through each and every chapter, each and every concept. Hello, Purnima. Right, but in the next week, in the coming week, actually, what I have planned is to solve the different states NTSE paper with you guys. Okay? So that is our plan for the coming week, where we will be discussing the question papers. Right? Hello, Naresh. So, beginning with Unacademy. Unacademy, this unit is for cracking the exams like NTSO, IJSO, PRMO, and with Unacademy, which is the largest, online platform. Huh, Bache, I told you, Kalaya Rasan, that in the coming week we'll be discussing the state-wise examination papers. Hi, Janya, what's up? So yes, at Unacademy, हम क्या कर रहे हैं? This is the largest online platform which is, giving us. Good evening, Bache Purnima. Anji, Unacademy is giving us, such a big platform to explore our educational needs and we can, thrive in it. तो जो भी आपको एग्जाम क्रैक करना है, come with us and we guys will crack it together. इसके लिए there is a little subscription that is required. I'll tell you about the subscription. पहले तो इस सब्सक्रिप्शन के हम बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट बीइंग दैट देयर बी डेली लाइव क्लासेस, राइट? So in these daily live classes, what is happening is that you and I are meeting. Hello, Star Education. So yes, you and I are gonna meet daily live on the platform, and we will be engaging in some fun learning activities. We are trying our best to make this learning procedure fun for you and for me, right? So, teaching is fun for me and learning should be fun for you as well, right? And there'll be live tests and quizzes. In live tests and quizzes में क्या होने वाला है? आपको बच्चे ये live tests and quizzes से आपको right then and there you can monitor your growth, that where is the projection going, right? And इसके अंदर structured courses हैं. Structured courses से I mean is that you just guys have to decide the target for your core and it's in our hands. It's our duty to cover all the syllabus. And there'll be, just like any other subscription of Netflix or Amazon Prime, there is an unlimited access in the world of education by this subscription. So it's not that you just, you guys are you subscribing by my code or by my thing. तो आपको सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा. नो, you are you are in for a lot of things for all the subjects. You have a chance of preparing with the top educators we have at Unacademy for the various exams. We have batches running so that you don't have to worry about syllabus completion. It will be that easy. It will be covered in no time. No worries for that.
Also, there are comprehensive syllabus. That is, this is, the complete syllabus coverage. We are ensuring you guys, you don't have to worry about anything. And how can you, what's the thing that is to be done on your part is that you have to download this Unacademy learning app. Unacademy learning app may, what is happening is, this is such a basic, a very convenient app that you guys can download on your mobile phones. You have to be, you don't have to be in the, hustle of this, the what, using laptops or PCs. You are just a click away on your phones, and you guys use phones much better than we do, right? So ab bas ek click dur hai from exploring the world of education, and I invite you guys to do that, right? अब ये हमारे एनटीएससी के प्लान्स हैं. These are your subscription plans. अब इन subscription plans में क्या हो रहा है बच्चे? Yes, subscription plans में क्या हो रहा है ये? But for 9th class, I always recommend that the 24 months they should take, and instead of paying rupees 21,000, they can pay what? 18,900 only by using my name as a referral code, right? And if the 10th class students have to buy the subscription, so 12 months ka subscription, which initially costs you 17,500, will cost you finally 15,750 only if you use my name as a referral code, right? So that easy. Okay. Also, if you back calculated, this amount is just 1313 a month. Anji, we can buy tab. It is this app is very well working on the phone also. There's I won't personally recommend you to go for it. If you have a phone with the YouTube and the app learning apps running really well, so you can use a phone. Yes, and for 24 months, it is just 788 a month. So it is that basic, that convenient, right? So I hope to see more and more of you guys at Unacademy. Do not forget to use my code, that is my name, DEVYANI, to avail this discount. And who doesn't like discounts, right? Chaliye, let us begin with this chapter. We have, almost finished off with this chapter, that is matter around us pure. We have almost finished off. We are finished off. So, matter, what is matter? Matter is something that has mass and it occupies space, right? So, something that has mass and it occupies space is known as matter. Where we dealt with purity was, हमने जब प्योर चीजों की बात की थी, then we talked of two things. One was substance and the other one was mixture, right? A mixture is made up of substances, and mixtures can be homogeneous or heterogeneous. This all we have covered, right? And substances के केस में substance हम उन्हें बोलते हैं which cannot be separated, which can't be separated by physical processes. By physical processes, right? So this is how we have differentiated between substances and mixtures. आज हम इस क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं? What are physical changes and what are chemical changes in terms of chemistry and the types of substances. Till now, what we have read about substances अभी मैंने discuss किया, something that cannot be further divided by any physical separation technique. ठीक है, तो जो भी physical separation technique से separate नहीं हो पाएगा, वो आपका substance बन जाएगा. ओशो पटेल, molecules and compounds, अभी हम इस chapter में आज वही discuss करने वाले हैं. Please wait a little bit. I'll be solving your questions, right? चलिए, so yes, mixtures हमने discuss किया था. Mixtures are of two kinds, homogeneous and heterogeneous. Homo means same. So homogeneous mixtures were those in which there was a same composition throughout, right? Same composition throughout, and whereas in heterogeneous, the composition was different, as in there was no, particular statement about the solution, about this mixture, that it has certain, same composition anywhere. It has different compositions. For example, if you mix, chalk powder and water, we have learned this example very well. We have discussed this, that whenever you were mixing chalk powder with water, what is happening in that case is that chalk powder is being suspended throughout water, right? Hello, Sushri, good evening, Batte. So yes, in chalk powder's case, it was getting suspended through the medium,
And in that case, what was happening was that you were not sure that in which corner of your container was the the chalk powder was present in a higher amount or a lesser amount, है ना? So this is what was happening, and that is why it was heterogeneous. Solutions we discussed, these are the homogeneous types of mixtures with the particle size diameter कितना होता है इसका 1 nanometer. This is your 10 raised to the power minus 9 meter. This is what we have. We are revising very quickly, right? Before getting on to the topic which we have to discuss today. Something which we have discussed in details. In case of Tyndall effect, it does not show Tyndall effect solutions because the particles are so small that they do not, they are not able to tell the path of the light which is falling on them. Perfect. In case of colloidal solutions, it is a heterogeneous type of mixtures which might appear homogeneous, right? It might appear homogeneous, but it is actually what? Heterogeneous. Perfect. Now, what is happening in this case? The particle size is actually greater than solutions and smaller than suspensions. ठीक है, इनका बीच का पार्टिकल साइज होता है. ऑल्सो ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं अंडर एनी सर्कमस्टेंस, राइट? बिकॉज इनके पार्टिकल ज्यादा बड़े नहीं होते तो फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट नहीं होता है. ठीक है, तो दिस इज वेरी मच इन द मीडियम ओनली एंड दिस exhibits Tyndall effect under any circumstance. ठीक है. Now, in case of suspensions, the particle size is maximum. They can be separated by filtration because they are larger particles, right? And in case of what? In case of Tyndall effect में जो है वो conditional Tyndall effect शो करता है. मतलब अगर आपका सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा. इट विल शो टिंडल इफेक्ट. बट इफ यू लेट इट सेटल डाउन, इफ यू लेट द पार्टिकल सेटल डाउन, देन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा. Why is this happening? Because once the particles are all settled down, then the suspension breaks and ऊपर जो है आपका clear solvent रह जाता है, solution बन जाता है और सारा particle जो heavier size का, bigger in size, it settles down. So what is happening above? You're getting a solution, and solution we know that it doesn't exhibit Tyndall effect, right? So this is what it is, and this is how it goes. Also, you have read two new words in solutions. Those were solute and solvent. And in case of colloids, you discussed dispersed phase and dispersion medium. Right? So this is what we have discussed. Perfect. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है. Pretty easy chapter है. अभी तक हमने ये डिस्कस किया because I can see a lot of new students in this class. तो अभी तक I hope there's no problem till now. Moving on to next, that what have we studied about till now? Yes, Chane understands. Perfect. So separating techniques. So when we were talking about mixtures, mixtures are having two or more substances. What if I wish to separate these substances? So there are some separation techniques which I'm gonna use, right? So we have studied about such separation techniques, and these separation techniques dealt with physical separation, that is your hand picking. If you can separate two objects just by hand picking, just like your mother, you have seen your mother separating pulses, and if there is rocks in it, a bit of pebbles in your pulses, so they can separate by physical separation, that is they're just hand picking them, right? And in magnetic separation, the separation of those which show you magnetic properties. ठीक है? So these are showing you what? Magnetic properties. So अगर आपको, if you wish to separate iron nails from sand, then what would you do? You will just bring your magnet to the sand, and once you do that, all the iron nails will get attracted towards the magnet and it will be separated from the sand. Sieving, bache, is the simple process. You have seen your, yes, absolutely right, near the sand. So sieving, in case of sieving, what you're separating is two solids on the basis of their size.
right? The smaller size particles will pass through the sieve holes, and the larger size will be on the sieve. So yeah, this is the common chunni that you use, and this is this is used. And filtration is one solid from a liquid. Okay. So filtration में again you're using a sieve where the solid particles are on the filtered filter paper or the sieve, and the filtrate passes through. So you're separating that. Winnowing is an amazing and very interesting, right, Vishwa? So yes, winnowing is a very interesting and a very good process, which is somewhere similar like sieving only, because this is used to separate wheat grains from husk. So what is happening over here? Look at the two compounds, two objects that you want to separate. One is the wheat grains, which are larger in size, which are heavier in size. The other one is husk. Husk, which is very light, right? Husk तो बहुत light होता है. So how do I wish to separate these two? What do I do is, or what do a person who wants to separate this? He stands at a height. Okay? So there's a platform, and the person stands over here carrying the wheat grains and the mixture of wheat grains and husk. So what is he doing? He's simply, letting the wheat grains fall on the ground. So wheat grains, since I say that they are heavier, they are gonna, by the action of gravity, they will fall down on the ground and they will form a heap over here. But what will happen to husk? Husk का weight बहुत कम होता है. Husk is very light. So if your air is blowing, so air will take away your husk. Hello, Akshay. Hi. So yes, air will take away your husk and it will go at another level, another distance. So husk ka jo leaf banega, that will be away from the wheat grains. So that is how you separate wheat grains from husk, and this process is known as winnowing. You must have studied this in your, class 6th or 7th. This is there. And this is gonna come. This can winnowing technique आपका NCERT में नहीं है, but this can come in your NTSE exam because ये question previous years में आया है, right? So winnowing हमें समझ आया what is happening actually. The person is standing at a platform. He's just making, he's just letting the wheat grains fall on the ground. Hi Vijay. Okay, so yes, he's just letting the wheat grains fall on the ground, and since they're heavier in nature, they're just simply by the action of gravity, they're just falling down. Right. And also the husk along with the wheat grains is going down, but with the action of wind, because husk is very light in nature, husk is forming another leaf, another wear, and that is how they are being separated. Perfect. That's how we know it. Chaliye. Let's discuss these separation techniques, which are very important over here. So if I wish to separate dye from ink, what am I doing is, ink is what? A combination of dye and water. Whenever bachcho I wish to separate out water, then I simply will go for the process of evaporation. Namaste Santosh ji. तो हम evaporation करेंगे whenever we wish to separate out water. So simple. We'll just evaporate the ink, and the water will be lost and we'll get dye. Right? What अब आप मुझे फटाफट से बताइए, what are the processes that you are gonna use for the separation of cream from milk? फटाफट से, I want quick answers from everybody. How do you wish to separate cream from milk? How will you separate that? बताइए. Anybody who knows the answer? Anybody? Okay, there's no answer till now. So yes, when you wish to separate cream from milk, then the process that will be employed will be centrifugation. Right? The process of centrifugation, what does it do? It lets the heavier particles settle down and the lighter particles float. Right? So this process is what? Centrifugation. Separation of mixture of two immiscible liquids. This is happening by separating funnel, right? So that's how it is taking place. In the case of separation of a mixture of ammonium chloride and salt, what are we making use of is sublimation. है ना? Because we know ammonium chloride has a tendency in which the solid directly turns into gas without changing into the liquid state. So in this case,
sublimation is the process that we are employing for the separation. ठीक है. Now when we wish to separate black dye into its component, हमने पहले क्या किया, dye को ink से separate किया. ठीक है. So there is ink जिसके अंदर, hello वैभव, जिसके अंदर इंक में क्या होता है, डाई प्लस वाटर. अब आपने वाटर को सेपरेट कर दिया, डाई को सेपरेट कर दिया. अब इस डाई को फर्दर इसके कंपोनेंट्स में करना है. देन द प्रोसेस व्हिच यू विल ऑप्ट इज chromatography, right? So chromatography is something that separates the color, because chroma means color, right? Absolutely right, Sonam, very good. So yes, we are employing, or we are using the process of chromatography to separate black dye into its components. So whenever we have to deal with different colors, then we go for chromatography, right? Do I not need to explain this? Because अगर ये पूरा हम ये chapter one shot में करेंगे तब इसकी explanations करेंगे. फटाफट से अभी we are just revising. So yes, separation of mixture of two miscible liquids. This is by distillation, right? In distillation, when two miscible liquids have certain difference in their boiling points, you can always go for distillation and then separate the two miscible liquids. Now in case of the two miscible liquids which have lesser difference in the boiling points, जब ये difference less than 25 Kelvin or less than 25 degree Celsius होगा, तो हम क्या use करेंगे, fractional distillation. ठीक है. अब separate the components of air again by using fractional distillation. Separate प्योर कॉपर सल्फेट. जब भी आपको बच्चे प्योर वर्ड यूज हो जाए, प्योरिफिकेशन करना है किसी सॉल्ट का, कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट, वी ऑल नो. तो फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल आपको किसी इम्प्योर में से प्योरिटीज को निकालना है, प्योरिफाई करना है. देन यू विल गो फॉर क्रिस्टलाइजेशन, राइट? सो दीज आर द सेपरेशन टेक्निक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. आज का हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज योर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, right? So there are a number of changes that are taking place around you. We have talked about this. So what is happening if there is a color, these are the properties which come under physical changes. These are the physical properties of a compound or of anything. Okay? So what is happening over here? If the color is changing, the hardness is changing, the rigidity, the fluidity, the density, the melting point, boiling point, such things are changing, then these are set to be physical changes, right? समझ आया? तो जब अगर ऐसी प्रॉपर्टीज में जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी कंपाउंड की, उनमें चेंज आता है, तो फिर आपका जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है. ठीक है. और जब आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो रही है, तो या फिर आपका कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है, या कोई एक सब्सटेंस टूट के कोई नए प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो उस केस में जो चेंज है वो केमिकल रहेगा. ठीक है. लाइक बर्निंग, इफ यू आर बर्निंग समथिंग, इट्स अ केमिकल चेंज. नाउ वी टॉक अबाउट इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स. सी, आपने पानी का केस देखा है. ठीक है. वाटर इज समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग एज आइस, एज लिक्विड वाटर एंड एज वेपर. Sorry, excuse me. Yeah, so water is something that is existing as in the three forms: solid, liquid and gas. That is your ice, water and vapor. All three forms of water you are very well aware of. चाहे इनका फिजिकल स्टेट अलग है, चाहे इनका अपीयरेंस अलग है, बट यू ऑल नो दैट केमिकली इट इज द सेम. ठीक है. केमिकली सेम है, तो बिकॉज ये केमिकली सेम है, तो इसका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स विल बी अ फिजिकल चेंज, बिकॉज एनी टाइम यू कैन रिवर्स इट बैक. रिवर्सिबल रहती हैं वो चीजें. तो इफ यू आर चेंजिंग आइस इनटू वाटर, यू कैन एनी टाइम गेट आइस बैक फ्रॉम वाटर, है ना? तो आप अगर एक बार आइस से वाटर बना लिया, आप वापस से वाटर से आइस बना सकते हैं. एंड इट इज सिमिलर द केस विद वाटर एंड वेपर्स. तो सिंस आपका केमिकल जो ग्रुप है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से ये क्या रहता है, physical change. Also now, chemical change brings change in chemical properties of matter and we get new substances. So chemical change is something जो उसकी chemical properties को change कर रहा है. ठीक है. So it has nothing to do with the physical properties. It is just changing the chemical properties. ठीक है. इसका एक example है burning. Right? It is usually a irreversible process. ठीक है. हम इसको reverse नहीं कर पाते easily under certain conditions. ठीक है जी. चलिए. All right. So what are we doing is chemical composition, elements and compounds.
तो हम जो सब्सटेंसेस हैं उनको, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, तो सब्सटेंसेस को हम उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के पे डिपेंड करके उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे दो चीजों में डिवाइड करते हैं. वन इज योर एलिमेंट्स एंड द अदर वन आर योर कंपाउंड्स. ठीक है. सो आई हैड अ क्वेश्चन इन द बिगिनिंग, but what is the difference between molecules and compounds, right? So चलिए अब देखते हैं what is happening over here. तो अब क्या हुआ था, there was the scientist Robert Boyle. ठीक है, इन्होंने something in 1600s ये define, ये term लाए थे element. ठीक है, but later on इसका definition, जो proper definition was given by Antoine Laurent. He was a French scientist. तो इन्होंने क्या कहा था कि एलिमेंट जो है वो किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म है. वो सिंपल केमिकल रिएक्शन से भी और सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं, you can't break that down, right? So element is something that is the basic form of matter. So what did Antoine Lawrence said? He said that basic form of matter that cannot be broken down, that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. Perfect. So such is known as an element. What is happening over here is that your फर्स्ट हमने क्या बोला था, सब्सटेंस क्या होता है जो फर्दर डिवाइड ना हो पाए बाय फिजिकल प्रोसेसेस. बट नाउ आप केमिकल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, आप केमिकल कॉम्पोजिशंस की बात कर रहे हैं. तो जब आपके पास एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस का मतलब अगर आपके पास केमिकल कॉम्पोजिशन देखा जाए, तो अगर उसकी बेसिक केमिकल कॉम्पोजिशन है तो इट इज गोइंग टू बी एलिमेंट. अगर दो या तीन एलिमेंट्स मिलके कोई चीज बना रहे हैं, देन इट इज गोइंग टू बी अ कंपाउंड. ठीक है. So this is what is happening over here. Hello Vivek, what's up? Yeah, so a compound is a substance composed of two or more elements chemically combined in one another in a fixed proportion. Right. So what is happening? ये आपको बात बहुत ही ज़्यादा in every chapter, in every exam you have to always remember that compound का जो formation होता है उसके अंदर element जो है वो एक fixed proportion में ही react करते हैं. Perfect. तो इसका मतलब H2O के केस में you need 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen only. That is your 2 AMU, atomic mass unit of hydrogen, and 8 of oxygen to form a molecule of water. So this is what is happening over here. ठीक है, समझ आया? चलिए अब हम एलिमेंट्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, that what are elements and what is happening in this. तो एलिमेंट्स में बच्चे हम ना क्या कर रहे हैं, इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है हमने बिकॉज ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. Perfect. ठीक है. So these are the 3 types of elements that we have, right? हम जब आगे चलते हैं in your class, then when you read your periodic table, then you'll understand that what is anything. हाँ जी, elements बच्चे just like I said, अभी मैंने बताया है कि elements वो चीजें होती है, वो बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक पार्ट है मैटर का, जिसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन से फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है. So that is your element. Perfect. Yeah. And 2 or more elements, they join up to form compounds. So this is what is happening over in this unit of your chapter. तो metals को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. metals के बच्चे ये यहाँ पे हमारे पास we have certain properties of metals, right? They are lustrous. Lustrous का मतलब ये होता है they have a shine on their surface. ठीक है. They have a, or you can say they have a shiny surface. तो metals जब आप देखेंगे, upon looking at them, they are lustrous. ठीक है. उनका जो स्ट्रक्चर, जो उनका सरफेस होता है वो थोड़ा शाइनी होता है. एंड यूजुअली जो मेटल्स होते हैं दैट सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो इन कलर, राइट? देन दे आर डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब होता है दैट दे कैन बी कट डाउन इनटू वायर्स. What is configuration? Configuration, Vivek ने पूछा है, configuration is a fashion in which electrons are arranged in your element. ठीक है. तो ये configuration, इलेक्ट्रॉनिक configuration की बात जब हम करते हैं, बेसिकली केमिस्ट्री में configuration वर्ड जब आता है, configuration का मतलब होता है कि how something is being arranged. So electronic configuration के केस में how electrons are arranged in the element, in the orbitals,
एंड कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक मतलब होता है अरेंजमेंट। जैसे आप पूछते हैं किसी भी गैजेट का व्हाट्स द कॉन्फ़िगरेशन, सो लाइक व्हाट ऑल इज इन इट, सो व्हाट इज द फैशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट वी हैव टू डील विद इन केमिस्ट्री is just the electronic things that are electrons that are arranged in a particular order. So that is what configuration is. ठीक है। So yeah, we were at ductility or ductile. Metals are said to be ductile. मतलब आप उन्हें एक wires, thin wires में convert कर सकते हैं. If you have a solid piece, you can always cut that down into wires. Malleable. Metals are malleable. मतलब they can be hammered into sheets. Perfect. So when you can, you have a big block of metal. So what can you do? Either you can hammer them down into sheets, पतली sheets बना सकते हैं आप, और आप wires बना सकते हैं, ठीक है। So this is what is a property of a metal that is allowing you to do so, right? So the next properties, they are sonorous. Sonorous का मतलब they produce a ringing sound when you hit on them. Hi Ayush. They produce a ringing sound when you hit on them, right? Thank you यार आयुष, thank you so much. ठीक है। तो metals की जब हम बात करें, first things first is that they are appearance में they are lustrous, they have a shiny surface, perfect. Then they are ductile, that is they can be cut down into wires. Then they are malleable, मतलब thanks आयुष, malleable का मतलब they can be hammered into sheets, they आपकी उनकी thin sheets बना सकते हैं. Then they are sonorous, मतलब if you click on them तो फिर उसके अंदर एक ringing sound produce होगा उसके surface पे अगर आप मारते हैं तो, ठीक है। They are conductors of heat and electricity, ठीक है। So they are perfect. This is a perfect property that you should learn and you should know कि metals जो होते हैं वो they are good conductors of heat and electricity. Perfect, fine. चलिए, थैंक्स विवेक। हाँ, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, these all are your metals. Perfect. Now when we were discussing that they are lustrous, ductile, malleable, तो इसका एक मतलब हम ये भी बोल रहे हैं that they are considerably solid, तभी आप उस पे हिट कर रहे हैं तो sonorous है, and you are cutting them into wires, you're making sheets of them, है ना। तो अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो हैविंग एन एक्सेप्शन तो साइंस में हर जगह आता है ना भाई। तो ये एक एक्सेप्शन या फिर एक ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, बिकॉज ये भी एक एनटीएससी के इट्स वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस दे हैव, दैट मर्करी जो है वो इट इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। अब इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, आप सबने थर्मोमीटर्स देखे हैं, मर्करी थर्मोमीटर्स आई नो सबके घर में है ना। अब तो डिजिटल्स भी हैं, बट यस आई होप एवरीबडी हैज सीन मर्करी थर्मोमीटर्स। सो देयर इज अ मर्करी लिक्विड इनसाइड योर थर्मोमीटर व्हिच एक्चुअली टेल्स यू द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है दैट मर्करी इज द मेटल, द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। परफेक्ट, ओके सोनम, चलिए, थैंक्स विवेक, थैंक यू। राइट, सो नाउ वी गो ऑन टू डिस्कशन ऑफ अबाउट नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में जब हम आते हैं तो मेटल्स का बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा ये। अब उसमें हमने दो स्पेसिफिक कलर्स कर दिया था, either they are silvery gray or they are golden yellow. यहाँ पे नॉन मेटल्स का they have variety of colors. They are that they don't follow any color code. They have variety of colors. They are poor conductors of heat and electricity. They don't care. तो वो poor conductors रहते हैं heat and electricity के। ऑल्सो जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स के केस में डिस्कस की थी कि वो लस्ट्रस है, डक्टाइल है, मेलिएबल है, सोनरस है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी नॉन मेटल ऐसा नहीं है जो लस्ट्रस हो, डक्टाइल हो, मेलिएबल हो, सोनरस हो। सो दीज हैवी वर्ड्स आर फॉर मेटल्स ओनली। आप इससे भी तरह से याद कर सकते हैं कि यार मेटल्स तो वो टॉपिक था जिसमें वो बड़े बड़े नए वर्ड्स हमने पढ़े थे, लस्ट्रस था, डक्टिलिटी थी, मेलिएबिलिटी थी, सोनोरिटी थी, तो वो चीजें यू ऑलवेज लिंक विद मेटल्स। नॉन मेटल्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। दीज आर नॉट lustrous, ductile, malleable or sonorous. Perfect. एक बार रिवाइज करें फटाफट, because I really don't want you to get confused in these terms. तो फटाफट से डिस्कस करते हैं। Lustrous is your shiny appearance, right? Then ductility और ductile अगर कोई चीज है तो उससे याद रखिए wires, ठीक है, कि a metal can be cut down into wires. Then if I say that something is malleable,
इसका मतलब कि मैं उसकी प्रिंट शीट्स बना सकती हूँ, ठीक है। एंड सोनोरस, सोनोरस के तो नाम में यार साउंड है, तो मतलब यहाँ पे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी व्हेन आई क्लिक ऑन इट, व्हेन आई हिट ऑन इट, ठीक है। परफेक्ट। हाँ जी, सही से दिख नहीं रहा? इज दैट अ प्रॉब्लम? ओ ओके, माय वीडियो मस्ट बी इंटरफेयरिंग, सॉरी सॉरी सॉरी। हम इसे दूसरे पोर्शन पे डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी बच्चे। Yes, so I was discussing these four words. One was lustrous. Lustrous was your shiny appearance. Then comes your word ductile. Ductile का मतलब it can be converted or cut down into wires. Then comes your malleability. अगर आपका malleable है, इसका मतलब आप शीट्स बना सकते हैं हैमर से, ठीक है। एंड इफ सोनोरस की बात हो रही है, तो सोनोरस के केस में साउंड प्रोड्यूस होंगे। परफेक्ट, दिख रहा है? चलें आगे। सॉरी, हाँ जी, चलिए। नॉन मेटल्स हमने डिस्कस कर लिया है। दे हैव वैरायटी ऑफ कलर्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट they do not possess these properties of being lustrous, ductile, malleable or sonorous. This is the example that hydrogen, oxygen, iodine and carbon, कार्बन में कोल कोक दोनों, ठीक है, all are non-metals. ब्रोमीन, क्लोरीन, these are also non-metals. अब हम आते हैं ब्रोमीन पे। ब्रोमीन इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये भी एक लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। परफेक्ट। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कोई जो दो ऐसे एलिमेंट्स, जो कि एलिमेंट्स बोला मैंने, ना मेटल बोला ना नॉन मेटल बोला, स्पेसिफिक नहीं बोला। व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट द लिक्विड मेटल, then it's gonna be mercury. When I ask you a question about liquid non-metal, then it's gonna be bromine. But if I ask you a question कि लिक्विड एलिमेंट बताना है, तो लिक्विड एलिमेंट के केस में यू गेट द आंसर्स बोथ दैट मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर द टू लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। परफेक्ट। सो दैट्स हाउ वी नो इट दैट इन केस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपके दो चीजें हैं, दैट इज मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। परफेक्ट। चलिए, नाउ वी टॉक अबाउट मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में क्या हो रहा है? मेटलॉइड्स क्या है? वो चीजें होती हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की दिखाती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की दिखाती हैं। सो दे आर नाइदर। गुड इवनिंग राजस्व, हाय। तो हाँ, मेटलॉइड्स की जब हम बात करते हैं बच्चे, मेटलॉइड्स वो चीजें होती हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करती हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज दे शो ऑफ मेटल्स, कुछ प्रॉपर्टीज दे शो ऑफ नॉन मेटल्स। इसके एग्जांपल्स हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर लाइक एटसेट्रा। परफेक्ट। तो यहाँ पे हर जगह एटसेट्रा लगा लेना यार, ठीक है। So this is how it is about metalloids कि वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करती हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है यार कभी कभी, ठीक है। एनटीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं मैंने। But there are 92 naturally occurring elements. So these are 92 naturally occurring elements. वैसे हमारे पास जो अभी तक एलिमेंट्स नोन है, दे आर मोर देन 100. So elements that are known are more than 100. बट उसमें से सिर्फ 92 है जो नेचुरल है, बाकी सब मैनमेड है, ठीक है। मेजॉरिटी आर सॉलिड। हाय सौरभ, व्हाट्स अप। हाँ जी, मेजॉरिटी जो है वो सॉलिड है, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। नाउ द थिंग व्हिच वी वर डिस्कसिंग, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। Hg is the chemical formula for mercury and Hg is what? Mercury. I hope you all know this. Hg is your mercury. हाँ जी, and Br is your bromine. So since we have just studied that this is the only metal that is what? Liquid, and this is the non-metal that is liquid. So entire element list. Hi Bhavna. So in the entire list, there are just these two which are liquid at room temperature. But in if you slightly increase this temperature by room temperature. Hi Anjali. Okay, श्रेयांश के नाम से इट्स अंजलि। हाय। सो या, अगर आप इस रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कहाँ तक? इट इज योर 303 केल्विन। इफ यू इंक्रीज योर टेम्परेचर टू 303 केल्विन, देन द कंपाउंड्स, द एलिमेंट्स लाइक सीजियम एंड गैलियम, ठीक है, ये Cs और Ga क्या है? इट इज योर सीजियम एंड गैलियम,
ये भी लिक्विड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, सिंपल। हाँ जी सौरभ प्लीज पूछिए, व्हाट इज योर क्वेश्चन, प्लीज आस्क। या आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, देयर इज नो देयर इज नो नीड ऑफ एनी फॉर्मेलिटी, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछिए। Yeah, so we were discussing that mercury or bromine तो already they exist as liquid at room temperature, but सीजियम और गैलियम जो होते हैं वो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाने पे ही लिक्विड हो जाते हैं, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट मींस, यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट मेल्टिंग पॉइंट इज, है ना, हमने पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिया। All right, so this is where we are drawing the differences between mixtures and compounds. अब मैंने ये बोला कि मिक्सचर क्या था, mixture was something, I'll change the color of my pen and I'll switch to red now. Anji, so mixture was what? Combination of substances, है ना, and compounds में it is a combination of elements, so you don't have to yet be confused, ठीक है, आया समझ? Okay, Anjali, you don't need to spam the chat box that you're Anjali, everybody got that, है ना, चलिए। So yes, we are drawing a difference over here in mixtures and compounds. How is a mixture different from a compound? अभी हमने बोला कि जो mixtures होते हैं, they are what? Combination of different substances. The two or more substances, they form a mixture. But compound में these are, अब substances are what? Elements and compounds. तो एक substance जो यहाँ पे combination of substance है वो mixtures है, and you can say that mixture is actually a combination of compounds. And whereas a compound is what? A combination of elements. ठीक है, चलिए। So yeah, elements or compounds just mix together to form a mixture and no new compound is formed, right? So यहाँ पे अगर आप इसे कैसे समझ सकते हैं, that you are forming a salt solution, है ना, salt solution is a kind of a mixture only. So where your salt is there and then there is water. So there are so many different elements and compounds. And compound elements react to form new compounds. Perfect. So आपका H2 is reacting with O2 to give you H2O. So this is a new compound that is formed of water. A mixture has variable composition. अब मुझे लेमनेड ज्यादा स्वीट पसंद है, आपको थोड़ा सॉल्टी ज्यादा पसंद होगा, तो हमारा लेमनेड डिफरेंट है, तो हम वेरिएबल कंपोजिशन रख सकते हैं, राइट। तो फिर मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, बट कंपाउंड्स के फॉर्म जो कंपाउंड्स का केस है, ऑलवेज द कंपोजिशन इज फिक्स्ड, ठीक है। ये मैंने बोला था आपको टू बी अवेयर ऑफ दिस, कि जो आपका कंपोजिशन है वो फिक्स होता है कंपाउंड्स के केस में। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, ठीक है। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, मतलब अगर आपका मिक्सचर है, दैट इज हमने लेमनेड का मिक्सचर अगर लिया है, तो उसके अंदर अगर नींबू चीनी यू हैव यूज्ड नींबू चीनी एंड सॉल्ट आल्सो, तो वो सबकी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। बट कंपाउंड के केस में क्या होता है, वो बिल्कुल ही, क्योंकि नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो नया प्रोडक्ट बनेगा तो वो नई प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। So what is happening over here? Hydrogen was a gas with some property, oxygen was a gas with some properties, but these two gases have come down to form water, that is a liquid, so it has its own property. तो कंपाउंड के केस में आपकी प्रॉपर्टीज जो है नए कंपाउंड की बिल्कुल अलग हो जाती हैं, और मिक्सचर जो है वो अपने रेसिड्यूज, अपने जो भी जिस चीजों से वो बना है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसकी प्रॉपर्टीज ही शो करता है। परफेक्ट इनफ। सो या द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। हमने ये पढ़ा हुआ, हमने सारे फिजिकल मेथड्स पढ़ लिए ऑफ सेपरेशन, कि मिक्सचर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। बट कंपाउंड्स के केस में, अगर आपको कंपाउंड को किसी भी चीज में, अगर आपको H2O को वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड करना है, तो आपका प्रोसेस यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस। परफेक्ट। तो इलेक्ट्रोलिसिस में मतलब आपको इसे फिजिकल प्रोसेस से आप सेपरेट नहीं कर सकते कंपाउंड को वापस से उसके एलिमेंट्स में, बट आपको केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस लगते हैं, ठीक है। परफेक्ट, that's something very clear. चलिए, मूविंग ऑन टू द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। आज फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। What we will have henceforth will be the question discussions, and then there will be one short video in which we will discuss the whole chapter
विद डेफिनेशंस, प्रॉपर डिस्कशंस, ठीक है, हम एक शॉट वन शॉट वीडियो में करेंगे। परफेक्ट। सो या, सो व्हाट आर वी सेइंग इज कि मैटर जो है, दैट इज अ सॉलिड और अ लिक्विड और अ गैस, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, आइदर दे कैन बी प्योर सब्सटेंसेस और दे कैन बी मिक्सचर, ठीक है। Mixtures are further classified as homogeneous or heterogeneous, and pure substances can be either elements or compounds. So what is happening over here is, Hanji, Shivkesh, no, there is no quiz today. Hanji, matter is wave. Ankit Kashyap, what is your, what do you mean to say that matter is wave? Please be clear. So yeah, pure substances के case में what is happening? There are two types. Santosh, we are, currently covering the chapters on the basis of, we are not leaving any logic, any concept unturned or untouched. ठीक है, हम सारे chapters को भी discuss कर रहे हैं for NTSC and for foundation and as well as for your boards. ठीक है? So yeah, elements and compounds cannot be broken into simpler substances. Then have fixed composition, can be broken down by chemical or electrochemical reactions. ठीक है? देन फॉर एग्जाम्पल आपके एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स कुछ भी आ सकते हैं। कंपाउंड्स में जो इन एलिमेंट्स के कंपाउंड बने हुए हैं वो, दैट इज योर वाटर, दैट इज योर H2O। वाटर क्या होता है? H2O। मीथेन क्या होता है? CH4। शुगर इज बेसिकली योर सुक्रोज। सॉल्ट अगर कॉमन सॉल्ट है तो वो NaCl होगा, ठीक है, दिस इज योर सुक्रोज। परफेक्ट। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैटर ऑल्सो बिहेव्स लाइक वेव बट इट्स वैल्यू इज वेरी लेस। ओके, ये NTSC के लिए है ना, पढ़ सकता हूँ मैम मैं नेक्स्ट ईयर। यस यस बच्चे प्लीज आप पढ़िए। ये NTSC में ऑफ कोर्स दिस इज गोना वर्क बिकॉज इसका हमारा जो ये सीरीज है दैट इज फॉर NTSC एंड फाउंडेशन, ठीक है। परफेक्ट। सो मिक्सचर्स के केस में देयर आर होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्म, दैट इज योर सेम कॉम्पोजिशन। हेट्रोजेनियस इज योर नॉन यूनिफॉर्म composition. For example, sugar in water, when you dissolve it, anyhow, anywhere, it's gonna taste sweet only and to that level only. Salt in water, sulfur and carbon disulfide, water and alcohol, perfectly homogeneous solutions. But heterogeneous solutions वो होते हैं जो जैसे मतलब जिनका composition सेम नहीं होता, आपस में soluble नहीं होते, जैसे कि sand and salt, sugar and salt, wood, blood, water and oil, etc. So these are the examples of your heterogeneous mixtures. ठीक है? I hope you got these. So what's next? In the next time that we meet, we are going to discuss questions. Now these questions will be your NTSC, जो previous year questions होंगे, जो इस साल आए हैं वो होंगे discuss. आपके NCERT के questions discuss होंगे. Then anything that is being asked on the basis of this chapter in your foundation, or anything that is left, हम हर तरफ से क्वेश्चंस लेके आएंगे कल इसके, ठीक है, एंड वी आर गोना डिस्कस दीज। परफेक्ट। और फिर उसके बाद इन द कमिंग वीक वील हैव अ वन शॉट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, होल चैप्टर, जिसके अंदर हम एक ही वीडियो में विल डिस्कस दी होल चैप्टर, ठीक है। Perfect. So now, before going, please do not forget to like, share, and subscribe to this channel. Like this video and share it with all your friends, and also bring them on next time when we meet because I want to see a lot of you. So yeah, and also I'm waiting for you guys on the Unacademy channel. Do not forget to use my name as the referral code to get amazing discount. Right? Yeah. Vivek has a question that what is NTSC? Actually, what we are teaching is NTSE. That is your National Talent Search Exam. Okay? Yeah. All right. Ma'am, when will we study carbon and its compound? Okay, वो हमारा we'll subscribe to this channel. हम या फिर मैं अगली बार I'll share a schedule with you guys जब भी हम जौन सा भी chapter discuss कर रहे हैं for 9th class and 10th class. So I'll definitely ऑल राइट, हम टेलीग्राम का लिंक भी सेंड कर देंगे। आप इस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक अटैच्ड है, सो यस यू कैन गो देयर। परफेक्ट। ऑल राइट, थैंक यू, इट वाज लवली हैविंग यू। हाँ जी विवेक, आई हैव टोल्ड यू कि
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो उसके अंदर सारे लिंक्स दिए हुए हैं, अनअकैडमी का, टेलीग्राम का, every link is attached there, so you can refer to that description. Perfect. Okay, bye bye. It was great having you guys. Do not forget to like this video and share it. Perfect. Chaliye, bye bye guys. See you next time. Tomorrow we are having a lot of questions for you guys in store, so see you tomorrow. Bye bye.